Hi friends, welcome back. I'm sorry for some technical glitch. It was dropped, but I'm back. Thank you so much for joining again. So we are talking about impactful and effective communication. So it takes place only when we are comfortable. Okay. फॉर एग्जाम्पल आज हम जो भी डिस्कस करेंगे हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उसको डिस्कस करेंगे. व्हाट हैपन्स व्हेन यू वांट टू से समथिंग लेकिन हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई नया वर्क प्लेस ज्वाइन किया है, राइट? सो जो वर्क प्लेस है वहां पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं जब हम एक नया वर्क प्लेस ज्वाइन करते हैं. So it takes time to open up to the team. For example, जब एक नया जॉब आपने ज्वाइन किया है, you don't know people, your managers, your juniors, seniors, you don't know anybody, right? So in that case, you have to ensure that you are calm, comfortable, and taking time as well as you are giving time to the people, right? Other than that, जितना भी टाइम आपको ओपन अप होने में लग रहा है अपने एनवायरनमेंट के साथ, उतना टाइम आप खुद के ही साथ आप दूसरों को भी उतना टाइम दें. क्योंकि अगर आप उस एनवायरनमेंट और उस टीम के लिए नए हैं तो दूसरे लोग भी आपके लिए और वो एनवायरनमेंट भी आपके लिए नया है, राइट? सो गिविंग चांस एंड टेकिंग चांस ऑलवेज हेल्प्स. सो व्हाट आई वांट टू से इज डोंट जज. अगर कोई समस्या है, अगर आपको एनवायरनमेंट काफी स्ट्रेंज लग रहा है, चीजें मुश्किल लग रही हैं. फॉर एग्जाम्पल जब हम एक छोटी सी कंपनी में काम करते हैं और उसके बाद हम किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उनका कल्चर, वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ टॉकिंग, क्लाइंट टाइप, प्रोजेक्ट टाइप, सो मेनी टूल्स, सब कुछ बहुत बहुत अलग होता है. एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रेंड्स. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कंपनीज में लोग आपस में बात करके प्रॉब्लम खत्म कर देते हैं, ठीक है? बट व्हेन यू जॉइन अ बिगर कंपनी इट इज मोर ऑन प्रोसेस बेस्ड. उसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, आपको टिकट्स रेज करने पड़ते हैं, हर चीज के लिए एक अलग डिपार्टमेंट डेडिकेटेड होता है. यू हैव टू राइट एन ईमेल. बट एट द कंट्रास्ट जब आप किसी छोटे कंपनी में हैं तो राइटिंग एन ईमेल फॉर एवरीथिंग मे क्रिएट अ प्रॉब्लम. लोग ये सोच सकते हैं कि शायद आप एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं या उनके खिलाफ कुछ रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे होते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डिफरेंस. सो जहां पे भी आपको ये पता चलता है कि आप किसी नई जगह पे गए हैं तो उस नई जगह पे डेफिनेटली कल्चरल डिफरेंसेस होंगे. सो प्लीज एक्सेप्ट दैट. वक्त दीजिए और वक्त लीजिए भी. नेवर बी टू फास्ट टू जज एनी सिचुएशन और पीपल और द एनवायरनमेंट. सो पहली प्रॉब्लम है ओपनिंग अप. सेकेंड थिंग इज इमोशनल बैरियर्स. जी हाँ फ्रेंड्स. सो इमोशनल बैरियर्स बहुत सारे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम पास आउट हूँ और मेरे सामने कोई बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहा है, मैंने नई कंपनी ज्वाइन करी है फॉर एग्जाम्पल, एंड देयर पीपल आर टॉकिंग सो मच इन फ्लुएंसी इन इंग्लिश, तो मुझे बड़ा घबराहट अगर हो रही है, ओके, सो आई वोंट बी फीलिंग कंफर्टेबल विद देम. एंड if I'm feeling emotionally low because they are better in speaking in English, this is a very typical scenario of a corporate office, right? So यहाँ पे what happens is जब हमें emotionally low feel होता है, okay, तो हमारा performance low हो जाता है. And in fact, even if you are working very well,
आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप टेक्निकली बहुत साउंड हैं, लेकिन क्योंकि आप ये फ़ील करते हैं कि आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते, सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है, जिसमें सभी लोग अपना-अपना स्टेटस शेयर करते हैं टू द टीम एंड मैनेजर्स कि मैंने ये काम कल किया था, ये मेरा आज का टारगेट है एंड इफ यू हैव एनी ब्लॉकर, you discuss that as well. But if you're not comfortable, you're feeling emotionally low because the other people are extremely comfortable with the language, English, or whatever. So you may feel emotionally low and you can take a back कि मैं कम बोलता हूँ या कम बोलती हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ, राइट? So यहाँ पे फ्रेंड्स, you have to be really ब्रेक योर मेंटल बैरियर्स। ये मन के दरवाजे हैं जो हम बंद कर लेते हैं या हम ओवर जज करने लगते हैं लोगों को और समटाइम्स इवन खुद को कि मैं नहीं बात कर सकता। जबकि यहाँ पे हाउ टू ब्रेक द इमोशनल बैरियर इज, आप अपने उस इमोशनल, जब भी हम इमोशनली लो होने लगे तो आप उसे कंसीडर ही मत कीजिए कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। प्लीज कंसीडर कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, राइट? तो जब आप ये कंसीडर करेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, लेट मी टेक सम मोर टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये बाकी लोग कैसे बोल रहे हैं। लैंग्वेज सीखने का या उस एनवायरनमेंट में सेट होने का सबसे अच्छा तरीका है गो विद द फ्लो। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। जो चीजें दूसरे लोग कर रहे हैं उसको थोड़ा-सा अडैप्ट कीजिए। तो आपका जो ये इमोशनल बैरियर्स हैं, फीलिंग लेवल पे, वो रिज़ॉल्व होने शुरू हो जाएँगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। अदर दैन दैट, डोंट क्रिएट द टैबू इन योर माइंड व्हेन यू आर फीलिंग इमोशनल कि ये ऐसा होगा या ये वैसा होगा, इट्स अ बिग कंपनी, तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होंगे, जो शायद मैं नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा जज किया जाएगा। मैं फिट हूँ या नहीं हूँ, मैं प्रोसेस बेस्ड कंपनी से नहीं आई हूँ या नहीं आया हूँ, सो इट मे यू नो दिस मे कॉज अ प्रॉब्लम फॉर मी। डोंट क्रिएट एनी माइंडसेट। So when you create a typical, a very, when you become hard headed, then it becomes a problem. We don't understand and we don't actually feel like, um, you know, breaking the barriers. And we have to, friends, we have to, because we are working in a company or in whatever environment, even if you're teaching in a school, okay, you're a teacher, maybe if you are doing a business, so अगर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कर रही हैं, आपके पास में एक क्लाइंट आते हैं जो डिफरेंटली ड्रेस्ड हैं, डिफरेंट कल्चरल वे में ड्रेस्ड हैं, जो कल्चर आपसे मैच नहीं करती है, तो अगर आप उनको एक जजमेंट ध्यान में रख करके अगर आप उसको जज करेंगे, आई मीन, सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज वेयरिंग साड़ी, तो हम जज करने लगते हैं कि ये पर्सन बहुत ज्यादा शायद ट्रेडिशनल हो गए या ऑर्थोडॉक्स होंगी, दिस वुमन वुड बी, बट मे बी ऐसा कुछ ना हो, शी वुड बी मे बी वेरी मॉडर्न, वेरी ओपन माइंडेड पर्सन, राइट? So this is how, never create a taboo. Don't create barriers just because of old images or the learnings we get from the society or in general, okay? So here for example, हम किसी को बॉडी स्ट्रक्चर से जज करने लगते हैं, हम किसी को लैंग्वेज से जज करते हैं, स्किन कलर से जज करने लगते हैं। There are so many other things. There are so many other things like racism,
gender. So it creates nothing but barrier for yourself, because when this person gives you the actual face what they have, right, then there actually you are surprised and not able to perform. For example, if a lady is walking in wearing a sari, और लोगों ने सोचा कि इनको तो इंग्लिश नहीं आती होगी, ये तो ऑर्थोडॉक्स होंगी, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल होंगी, बट actually she's very smart, very modern, very highly skilled. And when she starts asking questions or talking, presenting, everybody is taking aback and not able to actually face her or persist in front of her. So here your performance goes down, right? And it is very very common, in general, being human, we judge people based on the dress, hairstyle, this, that, everything. So never let your emotions lead your judgment, and break your barriers. Another thing is non-verbal communication. Please work on your body language. Yes, friends. एक लैंग्वेज होती है जो हम बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज होती है हमारे बॉडी जेस्चर. What kind of expression we have on our face, what we are many a times we say that your expression and your words are not matching, right? Maybe you're happy but you don't look happy. I mean, you're saying that you're happy but you don't look happy. Maybe you're saying you're comfortable but you don't look comfortable, right? So work on your body language. Learn how to sit, how to shake your hand with somebody when you meet. Be it as a, never be gender biased for that. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं कि if somebody is a girl or a female, they say this, and the men are shaking hands together, I mean with each other. So it's okay, it's definitely your personal choice, but don't judge that, neither self or not anybody else. Never do that. Okay. Another thing is expectations. What do we expect from ourselves or from the other person? It's very important to know, friends. It's very, very important. If we are not aware what we are actually expecting from the people, from the environment where we are in, right? So it may create a fuss. Okay. Another thing is cultural differences, as we have just now discussed. Another thing is information overloaded. This is a technical term, but nothing, it is nothing but the mindset. Yes, friends. When, since our childhood, when we are growing up, we learn knowingly and unknowingly judging people, right? So we have a lot of information, and then we follow social media a lot. We are, though we are also talking through social media only, but in social media, I mean through social media, whatever information we are gathering, we are not re-verifying. This is the most unfortunate thing. Whatever we are listening, seeing on in the videos, we think कि वही सत्य है, वही सच्चाई है, that's the only truth, but it's not the truth. You must re-verify the points which you actually learn from social media, from outside facts, okay, from the TV, in fact, from the news channels also, because people give the information, float the information, what information they want to float. I'm not talking that which is actually the fact. So it is our own duty to learn the facts on our own. Another thing is
when you have to, you know, learn something, learn to talk, learn to, about a new environment, new people, new team, new or old or anything for that matter. When you have to learn something, please always remember, in order to learn something new, you have to learn something old. For example, if your glass is full with something, some liquid, then you have to empty it to refill with something else. अगर आपका ग्लास ऑलरेडी किसी लिक्विड से भरा हुआ है, राइट, तो आपको कोई और लिक्विड या कोई और चीज उसमें भरने के लिए उसे खाली करना पड़ेगा. Am I right, friends? मैं अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइसेस अगर आपको आ रही हैं तो उसके लिए आई रियली अपोलोजाइज. There are certain noises which I cannot control. Anyways, so I'll continue. With the topic I was discussing is, in order to learn something, you have to unlearn something. जब आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं, so friends, here you ensure that you are able to welcome, your personality becomes welcoming. Now अब आपका ये सवाल उठेगा कि ये जो चीजें हैं ये बहुत वैलिड है, लेकिन ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड कैसे हैं? तो मेरा सवाल ये है आपसे कि जहां आप कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं या कल्चरली अनफिट फील कर रहे हैं, क्या आप वहां अपनी बात उतना क्लियरली एंड एफिशिएंटली रख पाएंगे? क्या इवन इफ यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टिपिकल कॉर्पोरेट सिनेरियो, जहाँ पे इन जनरल वी वर्क एंड कम्युनिकेट इन इंग्लिश, राइट? तो आप बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में, सब कुछ सही है, लेकिन उस एनवायरनमेंट में फिट होने में आपको टाइम लग रहा है, या यू आर फीलिंग इमोशनली लो, राइट? सो how will you be able to communicating effectively with your surrounding people, with your client? Maybe the client is too loose, he wants the output, but he doesn't want to give you any input, and he's having very stubborn face. He just look at you, just blank face. So how are you going to handle that situation? Because it becomes really difficult when you are talking to somebody and the other person is not reflecting back, not saying anything or doing anything, right? Not responding. It becomes really difficult, and which is very common, these type of conduct from the client side or from super managers. It's not because they want to misbehave or are rude people, just not like that. It's just that they are, this is the way they are. And maybe they are so big, they're working on so many different other areas. So this is one thing which they are just listening and just want to finish. Okay, fine, you say your point and I want to continue with something else. But you as an individual, it's definitely an important task for you. So this may give you a discomfort. So in that case, you have to understand that effective for establishing the effective communication, you have to be feeling comfortable. You have to breaking the emotional, ups and downs. You have to control your body language. Then your mindset has to be proper. Adapting the environment, adapting the people, the change. It's very difficult, friends, sometimes to adapt the change. We know that change is the only constant. You want it or you don't want it, the change will take place, and you will not come to know. In order to not to accept change, people hold on to the old things. आप कितना भी पुरानी चीजों को पकड़ लें, देयर आर मेनी पीपल जिनको फोन, मतलब फोन को हाथ लगाना पसंद नहीं था, बट आज की डेट में
हम सबके पास एक एक स्मार्टफोन जरूर है, and we are all almost the slave of our gadgets, isn't it? So this is how the difference lies. We have to understand that change is the only constant, and we have to welcome it. If we welcome it, then it helps. Like the technology helped us in COVID times. All the businesses were running because the technology was there. People were able to do the banking, people were able to purchase the grocery and lot of things, right? Because the technology was in place. Students could study. There are many people, I mean students who didn't, but they could study at least something, right? There are frauds, online frauds, but the cyber cell is also there, isn't it? So instead of cribbing, we should we should accept the change, admit it. We should be smart enough, isn't it? Last but not the least, feedbacks. जब भी हमें फीडबैक मिलते हैं, फीडबैक अच्छा भी हो सकता है, फीडबैक अच्छा नहीं भी हो सकता है, फ्रेंड्स. So in that case, we should be sporting enough to accept the feedback, whatever it is. And accepting it, it may not give you the immediate very good feeling, obviously. Suppose the feedback is not good, and it may not give you a very very good feeling, but when you accept, when we start working on the same, we are creating a bond with the environment and with the person who is giving the feedback. If somebody is giving the feedback, meaning this person has the authority to give you the feedback. And if this person does not have the authority, then I request you to let that person know that you don't have the authority. This is also extremely important if you have to be master of your communication. How to say no. If you don't know how to say no, then it's a huge problem. It's a huge problem, friends. We must learn to say no. We must learn to say yes. And when and what, to whom, what we are saying, directly, indirectly, or non verbally, body language. For example, our mothers are very expert in, non-verbal communication, isn't it? जब भी हम कोई गलती करते हैं and we receive a look, and the moment we receive that particular look, we know we have to change the action, we have to change whatever we are doing. It's not right, isn't it? And we change it, and things are controlled and fine, right? So these are all very important points to convert our general communication or ineffective communication to effective communication. These are extremely important points, friends, if we have to work to improve our communication. अगर आपके पास में कोई भी questions हैं, points हैं to discuss, please let me know. Please send your questions in the comment section, and we can discuss more in the coming episodes and next live sessions as well. I hope you like the session. If you like the session, please like, share, and subscribe. And please post your questions also. Thank you so much.